আলহামদুলিল্লাহ। দেখো বন্ধুরা, আজকে আমি চেন্নাই মেরিনা বিচ ঘুরতে চলে এসেছি। তো কিছু দৃশ্য দেখাবো আপনাদের, যে দৃশ্যগুলো হয়তো যারা হয়তো শহরে আসে দেখেনি, তাদেরকে কিছু দৃশ্য দেখাবো। তো চলো, প্রথমে এই দুটো বুঝতে পারছো তো, এই দুটা যেমন ধরো, এই দুটা হাতির দাঁতের মতন সিন। আর নিচে নিচে দেখাচ্ছ, নিচে হাতি, বুঝতে পারছো তো। আর এই সাইডে দেখো, চলো এই সাইডে, এই সাইডে দেখছো মানে গেট, এটা নিচে গেট, যেমন ইন্ডিয়া গেট আছে সেরকম গেট, একটা মেন গেট যাকে বলে কিনা। তো আমাদের সাথে কিছু বন্ধু এসেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব যে এখানে যারা ঘুরেছে তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করব যে ঘুরতে কেমন লাগলো আর কি, কেমন কি লেগেছে। তো এক এক করে জিজ্ঞাসা করব। তো তারা এখানে বসে আছে, তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে এখানে বসে আছে, জিজ্ঞাসা করি আর কোনখানে এসেছিল। জিজ্ঞাসা ক্যামেরাম্যানকে একটু কাছে আসতে বলো, একটু কাছে আসো, কাছে এসে দেখাও তোমরা কোথায় ঘুরতে এসছো বলো। মেরিনা বিচ ঘুরতে এসেছি। কেমন লাগলো ঘুরতে? খুব দারুণ। খুব দারুণ। তো তোমার কেমন লাগলো ঘুরতে? খুব ভালো লাগলো, সেই লাগলো ঘুরতে। ঘুরতে সেই লেভেলে ভালো লেগেছে বলতে, তোমার কেমন লেগেছে বাদিয়া? খুবই ভালো লেগেছে কাকা। হ্যাঁ, এরা ঘুরতে খুব ভালো লেগেছে বলছে, কিন্তু এরা কিন্তু বেস্ট ঘুরেছে ঠিক, কিন্তু বেকার যেটা আসল জিনিস সেটা তারা দেখতে পায়নি। তো ওখানে চলো, ওখানে কয়েকজন আরো বসে আছে। তো চলেছো ক্যামেরাম্যান, এই যে রমজান বসে আছে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। ওয়ালাইকুম সালাম, বলো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন কেমন লাগলো ঘুরতে চেন্নাই? কেমন লাগে ঘুরতে? ঘুরতে অনেক ভালো লাগলো, অনেক ভালো লাগলো ঘুরতে। আচ্ছা, কি কি দেখেছো এখানের মধ্যে, এই পার্কটার মধ্যে কি কি আছে? পার্কটার মধ্যে ঘুরতে অনেক রকম জায়গা আছে, অনেক রকম আছে ঘোরার, আছে পার্সোনাল জায়গাও আছে। আর আচ্ছা, তুমি বলো, তুমি বলো কি কি দেখেছো ভিতরে, মানে কি ভিতরে সবে তো মানে মেলে এরকম জিনিস বলা যাবে না। ট্রেন পুরো তামিলনাড়ু দেখেছো কিনা? হ্যাঁ দেখেছি। আচ্ছা, 3D ডিসপ্লেতে পুরো তামিলনাড়ু দেখে। এখানে আরো দু একজন ভাইরা বসে আছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। তো তুমি বলো। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যাঁ, তো কেমন লাগলো ঘুরতে এখানে এসে? বুড়া বুড়ি পাওয়া গেল দেখতে, এটাই খারাপ লাগলো। সবাই ভালো লাগলো। সবই ভালো লাগলো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই আমাদের সঙ্গে একজন তামিলওয়ালা ভাই আছে, তিনি হচ্ছে অমুসলিম, কিন্তু মুসলিমদের প্রতি খুবই দিলচাস্পি, খুবই ভালো ইন্টারেস্ট আছে। তো সেও সালাম দিয়ে কথা বলে। তো চলো দেখা যাক চলি, চলো চললে ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ರಿಗೆ ಎಬ್ರಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಸಲಾಮ್ கொடுத்துசொல்லு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்போ வந்து நம்ம சென்னை மெரினா பீச் வந்து இப்போ காலையில நாங்கள் வந்து மதியம் வந்து 2:15 இங்கே வந்தோம். இங்கே சொல்லிட்டாங்க சீட்டு வாங்கி தான் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 3:45 ஆயிடுச்சு உள்ளே போய். டிக்கெட் வந்து ஃப்ரீ தான், நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கு, வர்ற மக்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கு. இப்போ வந்து இங்க வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கு நீ உள்ள போயிட்டு வந்து இங்க இவங்க வந்து கலைஞர் நேமு ஓகேங்களா, இவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க, மக்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, எந்தெந்த தொகுதியில் என்னென்ன பண்ணாங்கன்றத ஒரு ட்ரெயின் ஷோ மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அங்க கூட்டிட்டு போனாங்க, அங்க கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சு தியேட்டர் ஷோலாம் காமிச்சாங்க. தியேட்டர் ஷோ காமிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரெயின்ல போற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங். எல்லாமே இங்க சென்னையில இருந்துகிட்டே திருச்சி, மதுரை இந்த மாதிரி வந்து எங்கெங்க என்னென்ன மக்களுக்கு நன்மை செஞ்சாரு அப்படின்றத எல்லாமே அப்படியே ட்ரெயின்ல போற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கோட நல்லா எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சுற்றி பார்த்தோம். சுற்றி பார்த்துட்டு எல்லாமே சுற்றி பார்த்துட்டு அப்புறம் மெரினா பீச் போனோம். மெரினா பீச் ஒரு 1/2 hour ரிலாக்ஸ் பண்ணோம், நல்லா இருந்தது. அந்த கடல் அலைகளோட சத்தம் நல்லா எல்லா மக்களுக்கும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 5 மணிக்கு என்ன பண்ணோம், திரும்பி கலைஞர் சமாதியை வந்துட்டு ஒரு 1 hour ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம், உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம். நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, তো তামিলে যারা বুঝতে পারছো তারা বুঝে নেবে, ঠিক আছে। তো কিছু দৃশ্য দেখাবো আমি, তো চলো আমি বুঝে দেবে। তো দেখো, ক্যামেরাম্যানকে আসতে বলবো, আমার কাছে আসতে বলবো একটু ক্যামেরাম্যানকে। তো আমরা এখানে এসেছি। তো দেখো, যারা ঘুরতে আসো তারা হয়তো ঘোরার ফিল্মটা নিবে অবশ্যই, ঠিক আছে। এখানে স্পিকার লাগা আছে, স্পিকারটা দেখা তো কাছে, স্পিকার লাগা আছে বুঝছো।
মিউজিক বাজছে ওই যে এই স্পিকার একটা। আর হাতিটা দেখো তো, হাতিটা এই যে এই সাইডে হাতি আছে একটা, হ্যাঁ এই সাইডে হাতি। তো ঘুরতে কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, যারা আসো তারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর যদি ভিডিওতে কোনো ছিটছাট থাকে তো কমেন্ট অবশ্যই জানাবে। আর ওই যে ভালো লাগলে লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। হ্যাঁ 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 কতক্ষণ হলো?